Hello, welcome all of you to this program. On 17 December 2024 at National Media Center, New Delhi, Dr. Jitendra Singh, Honorable Union Minister of State, Independent Charge for Science and Technology, unveiled Kisan Kavach, Bharat's first of its kind anti-pesticide bodysuit for farmers, which is designed to protect farmers from the harmful effects of pesticide exposure. Dr. Alka Sharma, Senior Advisor, Department of Biotechnology, said, It is a matter of great pleasure to welcome you all for this launch of Kisan Kavach, Bharat's indigenous anti-pesticide suit for farmers. At present, there is no single technology available to chemically deactivate pesticides before they enter into the body to protect farmers from pesticide exposure. Therefore, Kisan Kavach is a Bharat indigenous anti-pesticide suit for farmers and protects the health of farmers by preventing pesticide-induced toxicity and lethality. Today, our Honorable Minister will launch the Kisan Kavach and distribution of Kisan Kavach to the farmers, followed by interaction of the Honorable Minister with the representatives of the press and media. And a big thank to our Honorable Minister for his gracious presence for this launch event of Kisan Kavach, Bharat indigenous anti-pesticide suits for farmers. The Kisan Kavach anti-pesticide bodysuit has been developed by Brick Instem, Bangalore, in collaboration with Sapio Health Private Limited, a spin-off company of Brick Instem, to prevent pesticide-induced toxicity and lethality. Dr. Manisha Inamdar, Director, Brick Instant, said, INSTEM is an autonomous institute established under the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, and part of the prestigious Biotechnology Research and Innovation Council of DBT. INSTEM's mandate is to undertake world-class research in the area of stem cells and regenerative medicine for the benefit of humankind and society. Capitalizing on our diverse and cross-disciplinary expertise, we aim to address complex problems beyond the scope of individual laboratories. Our scientists are focused on developing deep science technologies to address problems in healthcare through chemical and cell and gene therapy technologies, and we foster an enabling ecosystem for the development of out-of-the-box and indigenous solutions to solve unmet societal needs. During the COVID-19 pandemic, when, along with our partnering institutes and collaborators, INSTEM contributed to COVID testing, developing novel tools and technologies such as transgenic mice at the Mouse Genome Engineering Facility, diagnostic kits, and contributed to INSACOG sequencing efforts, all these to better understand the disease and find new ways to tackle it. We believe in emphasizing at INSTEM on be local and go global. And for this, we have set up a biobank as a resource for quality stem cell lines, importantly, these being of Indian origin, representing the Indian genetic background. We have also made several efforts to develop strong technologies that will improve women's health, especially through our program in women's reproductive health called WORTH, which is aimed at closing the gap in our understanding of early events in reproductive biology and human development. Our initiatives to increase women's participation in science and technology have earned the Confederation of Indian Industries Women in STEM Award in November 2024. INSTEM also hosts the National Cryo-Electron Microscopy Facility and has an MOU, is part of the DBT ISRO MOU for cooperation in space biotechnology. INSTEM has established robust processes to encourage scientists to develop impactful technologies and translate them into market through practicing science entrepreneurship. A few examples include the development of germicidal masks to neutralize the SARS-CoV-2 virus, the development of the blood bag that increases the shelf life of human blood, and similar technologies, including the BSL-3 technologies, and we are part of the National One Health Missions program for pandemic readiness. The Center for Stem Cell Research Clinical Translation Unit of INSTEM, located in CMC Vellore, and is focused on gene editing technologies to address blood disorders. And importantly, a first-in-human phase 1 clinical trial was completed for hemophilia A for factor VIII deficiency and was recently published in the New England Journal of Medicine. So INSTEM is fully committed to delivering on the BioE3 policy of the government. Prevention is always better than cure, and hence we try to find solutions to overcome problems before they arise. The Kisan Kavach technology, which will be launched today, is based on a multidisciplinary approach
approach, intervening at the grassroots level. In brief, protective technologies to prevent pesticide exposure in farmers were developed by Dr. Praveen Vemula's lab at BRIC InStem. To commercialize the technology, Dr. Vemula founded an InStem spin-off company, CPO Health Private Limited, and IP was licensed to CPO to develop, manufacture, and commercialize the technology. We wish the Kisan Kavach technology would reach every farmer, both men and women in the country, to protect them from suffering from the toxic effects. And this endeavor will be successful with support from the government to take this technology and disseminate it to farmers across the country. The Kisan Kavach is an example that showcases how fundamental research can be taken from bench to application. It highlights the philosophy, approaches, and strength of BRIC InStem and DBT in contributing towards Atmanirbhar Bharat and the philosophy of Jai Jawan, Jai Kisan, and Jai Vigyan. The scale of agriculture community is huge in our country. Farmers from India and developing countries are exposed to toxic pesticides through dermal and nasal routes while spraying in the field, which causes numerous toxic and lethal effects such as fever, muscle pain, vomiting, breathing disorders, tremors, vision loss, and death in certain cases. Dr. Praveen K. Vemula, scientist, BRIC Instant. Today I'm going to give a brief introduction about overview about the technologies what we developed at Kisan Kavach. This is the Bharat's first indigenous protective suit for the farmers to protect from the pesticide toxicity. And typically if you see all the pesticides, they are highly neurotoxin. They are designed to kill the pests. And the insects, they have this enzyme called acetylcholinesterase, which plays major role in how their neuronal system works and their muscle systems work. And all the pesticides, they are designed in such a way, they covalently they bind and inhibit this enzyme, deactivate this enzyme, that leads to severe neurotoxicity and paralysis and death. That's how pests die when you spray the pesticides on the insects. But unfortunately, these chemicals, they do not discriminate between pest and human, because we do have the same enzyme and same function of that enzyme. So when we get exposed, we have the same toxicity. And typically farmers in India and all the developing countries, they spray pesticides like using these motorized machines without having any protection. And it's almost like walking under the poisonous rain. It falls on their skin, they inhale, and this causes severe toxicity. Before even starting the project, what we have done is to understand the grassroots. We spent like 8 months in the field. We launched a survey and almost visited 60 villages, spoke to 200 farmers to understand, and not just like an interview, but like each farmer we timed in such a way that when they spray, we used to go and spend 2 days to understand what kind of pesticide they use, how much toxicity they get, and do they use any protective measures or so on. I think that is one of the best decisions we have ever made that completely changed the perception of pesticide toxicity. If you see, when you have the acute toxicity, the same day when they spray, they suffer with huge side effects like vomiting, diarrhea, and tremors and so on. But if you have high toxicity exposure, that can lead to loss of vision and death. This happens very often. And very recently, ICMR NIN study showed that even the chronic exposure also lead to severe cancers. Therefore, there is a huge unmet need to develop the technology to protect these farmers. Most of the times, what people also try to use these PPEs, but these are non-breathable fabric. So therefore, they don't feel any comfortable, in the compliance is very zero. That's why people don't use it. But many farmers, they also think that maybe clothes can protect them. They wear full sleeves and also they wrap around towels and farming. But unfortunately, it has a negative impact because it's captured more and it acts as a depot. They get more exposure. So what we thought is instead of having a physical barrier cloth, you can use the same cotton, but we developed the chemicals, which are specialized chemicals attached to this fabric. What it does, if any pesticide comes in contact, they chemically react and break down in such a way that it can no longer cause the toxicity. In that way, one can able to prevent the pesticide exposure. And for that, this the chemistry, these are the compounds what we have developed, which can be attached to the completely 100% cotton fabric. And this activated fabric can stitch into protective gear and the mask and so on. Just to show one example, how effective it is, all the farmers also, they keep getting re-exposed, right? Just test their robustness. You can take the animals repeatedly exposed to the pesticide, either directly or through a normal cotton fabric or this new innovative fabric. So when you do that, if you see the animals that were exposed either directly or through normal fabric, all of them, they die within 4 days. But whereas even repeated exposure through your activated fabric completely protected them, you see the 100% survival. And we have done extensive studies to show that in fact, aerosol form of pesticides also can be completely prevented, the exposure using this oxime fabric, and also entire
their neuronal toxicity can be reduced and their entire neuromuscular dysfunction we can reduce, their productivity can be increased. So just summarize the salient points of this technology is like your organophosphate, carbamates, pyrethroids and so on, and whatever available in the market, more than 95% of all of those compounds can be deactivated by this suit. And also they have to do the forming under the labor intensive one, so we need to have the highly breathable fabric. So this is completely breathable fabric, it gives the comfort, and also like it has to work cold winters and hot summers, therefore like it's designed in such a way that wide range of temperatures it is still active. And also farmers, they work under the sunlight, and majority of these chemicals they deactivated under sunlight, right? That's why we developed the technology which is like highly stable in the sunlight. And also more importantly, it has to be reusable. Disposable wouldn't work. So we have shown that even 150 times you can wash and still it is active. Means like easily one can wear 1 to 2 years happily. With that, like mentioned, like not only developing technology to take them to and further manufacture and bring to the lab, to the market, we formed a spin-off company called Sepio Health, and we manufacture these suits. And this is the suit design where you have the pant and shirt with the inbuilt face mask it will have. And to test its efficacy in the human, the pilot studies were done. It's highly validated by institutes from ICAR and also agriculture universities, agri companies. They took these suits and gave to the farmers to get the feedback. And happy to say that this is the way they spray pesticides. And so far, a couple of hundreds of people have done the pilot studies, and we have seen 100% conversion rate, meaning when they spray without any protection, same day within an hours, they start feeling entire side effects with body aches and fevers and so on. They suffer next 4 days. So when they use this Kisan Kavach, they see a complete protection. Even after 3 hours spraying, they don't feel that even they sprayed the pesticide that day at all. So that was the huge encouraging for us. Our aim is to now take to now crores of farmers across this country. So with that, I would like to just take a moment and thank the people who developed. These are phenomenal PhD students and postdocs and graduate JRFs in the lab. In fact, Ketan was also part of the DBT. Spent some years. He was a graduate student. He initiated entire project. And Dr. Om Prakash was also right from the inception. He was there, taking from the farmer surveys to till today, who is in the audience. And I would like to thank Department of Biotechnology and for extensive support, and also INSTEM for providing both financial support, also procedural support. And I would like to thank BIRAC also, where initially we developed another form, dermal gel, which was funded by BIRAC. With that, I would like to thank for giving me this opportunity, and we hope that we will be able to save every single farmer from this pesticide toxicity. Kisan Kavach is a first-in-class technology to protect farmers' health from pesticide-induced lethality. It's a bodysuit developed for farmers to protect them from the harmful effects of pesticide and insecticides. Dr. Rajesh S. Gokhale, Secretary, Department of Biotechnology and DG, BRIC. This Kisan Kavach is an innovative product, first in class. पहली बार इंडिया में बनाया है ये, और वर्ल्ड में भी ये अभी तक अवेलेबल नहीं है. And this is really a spectacular success of what I would like to call कि सबसे पहले you go and identify a problem, then you do science in the lab, then you convert it into technology, set up a startup, then you do commercial production of this. So this is a complete wholesome package that the government of India has been wanting to have autonomous institutions to put it together actually. And therefore I congratulate INSTEM, both the students, researchers and the director for this fantastic stuff what we have been able to manage to do this. BRIC INSTEM जैसा कि पहले बताया हुआ, एक DBT के हमारे एक autonomous organization है, Biotechnology Research Innovation Council. इसकी एक constituent laboratory है, और ऐसे 13 laboratories all across the country हमारे देश में है, और अलग-अलग तरह की technologies और innovations और scientific research करते हैं. And this is one wonderful example of this. In fact, अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के leadership में हमने बहुत सारी नए उपलब्धियां की हैं. And sir, your guidance and your society, that whatever your guidance you provided us was very, very wonderful example of how we should move ahead into the future of creating an innovation ecosystem which provides completely new solutions for new Bharat. And I think that is where ये जो example जैसे आपने देखा, cotton fabric का जो cellulose जो होता है, उसमें एक covalently attached nucleophile moiety लगा दी है, जिससे organophosphates और carbonates जो भी होते हैं वो inactivate हो जाते हैं.
जैसे कॉन्टैक्ट, सो डर्मल कॉन्टैक्ट के थ्रू आपके बॉडी में जाते नहीं है। एंड आई थिंक ये जो पर्पस है ये फ्रीक्वेंट जो लोग यूज करते हैं उनके लिए ज्यादा होता है। एक आध बार करने से तो आप यू कैन गेट रिड ऑफ दिस वेरी इजीली बाय योर ओन बॉडीज मैकेनिज्म्स एंड अदर्स, बट जो फ्रीक्वेंटली और काफी रिपीटेटिवली यूज करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी चीज है। और इसीलिए ये जो पायनियरिंग रिसर्च के साथ जो एक्टिविटीज की हुई है ये हमारे मंत्री जी के गाइडेंस और उनके मेंटरशिप के अंडर हमने किया है। जैसे कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले, इसी तरह मैं बताना चाहूंगा कि नेफिथ्रोमाइसिन करके एक एंटीबायोटिक भी रिलीज किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, विच वॉज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट इवेंट बिकॉज 35 ईयर्स में पहली बार एक 4th जनरेशन कीटोलाइड मॉलिक्यूल जो दूसरे एक कंपनी ने बनाया है, बायरैक के सहयोग से ये बना हुआ। इसी तरह अभी हमने काफी नई चीजें कर रहे हैं। और सर, लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर यू अनाउंस्ड दिस 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ रेफरेंस मैप ऑफ द डेटा सेट्स ऑफ आवर country's whole genome sequence, which will now in future allows us help us to customize drugs and therapies. And therefore this is very important that we continue to enhance our scientific and technological prowess in our country for be able to take up to the next challenge. So in the first foundation day of BRIC, we announced a very important program called One Day and One Genome Initiative actually. So this was a very important activity where हर एक माइक्रोब का जो हमारे देश में हमारे अपना बायो रिसोर्स है उसका जीनोम हम हर रोज एक अनाउंस करते हैं। एंड दिस इज अ वे टू से कि भाई हमारे देश में क्या है, इसमें कौन से जीन्स हैं, क्या ये जीन्स का वैल्यू हो सकता है, एंड ऑल्सो टू एक्साइट पीपल एंड अंडरस्टैंड दैट द वेल्थ ऑफ अवर कंट्री इज अमेजिंग। और जैसे माइक्रोब आप सेल फोन से आइसोलेट कर सकते हैं या फिर अपने टोमेटो के ऊपर ग्रो कर रहे होंगे उसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, या किसी प्लांट के ऊपर से या ह्यूमन बीइंग से कैसे माइक्रोब निकल सकते हैं और उनमें कौन से जीन्स हैं और ये जीन्स क्या चीजें करती हैं, ये सब दिखाने के लिए हमारा एक प्रयोग ये चल रहा है। एंड आई थिंक एज यू रिमेंबर, एज भारत is progressing into the next generation of innovation cycles, we are making science, technology and innovation alignment for the Viksit Bharat, which is actually the main purpose of our country's future next 25 years as provided by a vision by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Also, this transition requires tremendous amount of biotechnological innovations to happen, and to do that we are actually trying to open up biomanufacturing hub across the country which will promote new innovations and scale up technologies. And towards this we announced a policy called BioE3, which is biotechnology for employment, environment and economy. And this biotechnological BioE3 policy is going to be guiding principle of how our country will provide innovations in the country. I think lastly I would just say that this is a wonderful occasion to celebrate successes of science and technology. Actually, Kisan Kavach is a fantastic example of how innovations can drive solving people's problem. And I think this is the time when we should all cherish the moment together. My only suggestion to all of you is let's seize the moment and work collectively and shape the future that is more inclusive, sustainable and impactful. The first batch of Kisan Kavach suits were distributed to farmers, marking a significant step in protecting the 65% of India's population engaged in agriculture. अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे सभा में उपस्थित प्रगतिशील किसानों को किसान कवच आवंटित करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सर्वप्रथम श्री प्रीतम सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। श्री पलविंदर सिंह जी, श्री मंजीत सिंह, श्री मानविंदर सिंह, श्री सुरजीत सिंह, श्री सत्यवान, श्री यादराम, श्री देवदत्त यादव, श्री हवा सिंह, श्री छोटू राम, श्री जगदेव सिंह। मेरा नाम प्रीतम सिंह, गांव उरलाना, जिला पानीपत में आया हूं। मेरा यहां बोलने का पर्पज सिर्फ 2 सेकंड। डॉक्टर वेमुला जी बैठे हैं जिन्होंने ये हमारी बहुत समय से ये डिमांड थी, और मैं बहुत सी कंपनियां जो दवाई बेचने के लिए आती थी तो उनको यही कहा जाता था कि महाभारत में हम सुनते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया और वो मारा गया, तो आप हमें दवाइयां दे के चक्रव्यूह में तो फंसा जाते हो, लेकिन उसमें से निकलना कैसे है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये बहुत समय से हमारी डिमांड थी कि हमें एक ऐसी यूनिफॉर्म चाहिए। हमारे जो एग्रीकल्चर, मैं मजदूर नहीं कहता उनको, मैं उनको बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर हमारे हेल्पर जो हैं, वो हमारे परिवार के मेंबर हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। जहाँ हम खेती करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड डालना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें हमारे वर्कर की सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो मेरी बहुत चिरों से डिमांड थी, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, सिंजाइंटा, बायर, उन सभी से मैंने यही डिमांड रखता था कि आप दवाइयां तब लेके आएं अगर हमारी सेफ्टी किट लेके आते हैं। हमारी खेती वो है जो हमारे खेत में खड़ी है और आपकी खेती हम हैं। अगर हम जिंदा हैं तो आपकी खेती है। मेरे गांव में भी बहुत सी दवाइयों से मिसहैपनिंग हुई सिर्फ ना सेफ्टी किट होने की वजह से। युद्ध में लोग जाते थे, जहां तलवार लेके जाते थे वहां साथ में एक ढाल भी लेके जाते थे कि विरोधी का वार को रोकना कैसे है। तो सेफ्टी पहले है। तो जिन जिन साइंटिस्टों की टीम ने इसमें काम किया है, मैं तहे दिल से सभी किसान भाइयों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं, और मैं इस संस्थान का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तकरीबन 150 करोड़ लोगों में से हमें चुना इस सभा में आने के लिए। मैं पुनः
सभी का धन्यवाद करता हूँ, इस संस्थान का धन्यवाद करता हूँ। Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of State, Independent Charge for Science and Technology, in his chief guest address, remarked, We are actually addressing simultaneously 4 or 5 priority flagship programs and priority agenda of Prime Minister Shri Narendra Modi. सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये विभाग पहले गुमनामी में था, मोदी जी ने इसको खींच के बाहर निकाला। कोविड के समय में इनको जो प्रोत्साहन मिला, सहयोग मिला, उसका ये परिणाम है कि इन्होंने सबसे पहला कोविड का वैक्सीन इजाद किया, डीएनए, और सारी दुनिया को भेंट किया। उसके बाद एक करके एक इनके वैक्सीन निकलते जा रहे हैं। अभी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कैंसर के लिए इन्होंने वैक्सीन इजाद किया। हिंदुस्तान से पहली एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के इलाज के लिए वो भी इन्हीं के द्वारा हुई, और उसका प्रकाशन न्यू इंग्लैंड जर्नल, जो विश्व विख्यात एक पत्रिका है, उसमें हुआ है। उसके अलावा जीन के माध्यम से बीमारियों का इलाज करने का भी काम इन्होंने शुरू किया, और ये सब काम पिछले 5-6 वर्षों में हुआ है। और एक हीमोफीलिया होता है, एक रक्त की बीमारी, उसके लिए। साथ ही साथ जो इस सरकार में पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार के साथ चला करके चलना, क्योंकि सब कुछ सरकार पर छोड़ा नहीं जा सकता, सरकार के पास इतने साधन भी नहीं रहते, और बहुत सारी ऐसे गुण सरकार के बाहर भी उपलब्ध होते हैं जिनसे हमें इनपुट्स मिल सकती हैं। केवल आर्थिक तौर पर नहीं, कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी हैं, जैसे विशेषदार साहब ने बताया, कोई जमीन की हकीकत है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बधाई की पात्र हैं। प्रोफेसर इनामदार और उनकी टोली, इन स्टेम इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, उसने एक कंपनी के साथ साझेदारी की, जिसका भी डॉक्टर राजेश आपको बता रहे थे। तो एक जो हम कह रहे हैं कि इंटेग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करना, साइलो से निकल करके संयुक्त प्रयास से काम करना, उसका भी ये उदाहरण है। सो इन दैट वे यू कैन से दिस इज होल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो होल ऑफ नेशन। होल ऑफ साइंस हो गया जब इन्होंने साझेदारी की, और होल ऑफ नेशन हुआ जब आप जुड़ गए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी सदा कृषि क्षेत्र से जुड़े सज्जनों के लिए चिंतित रहते हैं, और इस सरकार ने समय समय पर अनेकों ऐसे प्रावधान लाए हैं, चाहे वो किसान बीमा था, चाहे एमएसपी था, और भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स। तो उसी दृष्टि से इस विभाग की ओर से एक विनम्र भेंट हम कृषि जगत के अपने साथियों को इस सारी टोली की ओर से प्रस्तुत कर रहे हैं। सो दैट इज अनदर ट्रिब्यूट टू दी प्रायोरिटी दैट द गवर्नमेंट गिव्स टू द फार्मिंग कम्युनिटी। तीसरा, इसी सरकार की एक प्राथमिकता है स्वच्छता, जिसकी सरदार साहब भी बात कर रहे थे। तो उस स्वच्छता के कॉज को भी किसी न किसी हद तक, थोड़ी या अधिक मात्रा में, उसमें योगदान इस प्रयास के माध्यम से हो रहा है। चौथा है प्रमोटिंग ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्टार्टअप्स पर बल दिया, 350-400 से बढ़ करके हम 2.25 लाख तक पहुंच गए, और ये भी एक माध्यम बन सकता है ऑल्सो ऑफ स्टार्टअप्स टेकिंग इट अप एंड ऑल्सो मेकिंग इट अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, ये सारा का सारा ये जैकेट और ये पहनावा आप देख रहे हैं, इसकी कल्पना भी यही हुई, इसकी जांच भी यही हुई, परख भी यही हुई, और इसका निर्माण भी है। तो भारत अब किस हद तक सक्षम हो चुका है बिना किसी और पर निर्भर किए हुए, वो भी इसी बात में अंकित है। और हम ये चाहेंगे कि इसका लाभ धीरे धीरे किसान वर्ग को तो मिलेगा ही, लेकिन और लोग भी जो इस तरह के कामकाज में जुड़े हैं, इस तरह की जिम्मेवारियों में, जहाँ पेस्टिसाइड्स का काम करना या जहाँ कीटाणुनाशक दवाइयों से कोई नुकसान होने की संभावना रहती है, वहाँ भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त भी अब ये चूंकि इस विभाग के साथ संबंध बन गया है हमारे किसान भाइयों का, तो आने वाले समय में भी अनेकों प्रकार के इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। इसी मंत्रालय में दूसरे विभाग हैं, CSIR वहाँ पर भी है, और उसके लिए भी हम सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये 3-4 विभाग जो जुड़े हैं, सो वी हैव CSIR, वी हैव DBT। हमारे CSIR में हमने 2 मिशन शुरू किए हैं, एक अरोमा मिशन, एक फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में बहुत सारे युवा जुड़ गए हैं, और वो दिल्ली में भी ऑनलाइन तरह तरह के गुलदस्ते बांट रहे हैं, कहीं शादी ब्याहों में, कहीं पार्टियों में, और लाखों में खेलना शुरू किया उन्होंने। तो उस तरह का बढ़ावा दिया जाए ताकि सरकारी नौकरी के अतिरिक्त क्या क्या विकल्प है एग्रीकल्चर के माध्यम से, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रधान देश है, उसकी भी हमें जानकारी रहे और हम उसका लाभ भी लें। बहुत बहुत धन्यवाद। Kisan Kavach is not just a product, but a promise to our farmers to safeguard their health as they continue to feed the nation. The washable and reusable suit priced at 4,000 can last up to a year and employs advanced fabric technology to deactivate harmful pesticides upon contact, ensuring farmer safety like never before. With this issue of Science Talk ends. Narrated by Priyanka Kumari and presented by Dilip Jha. This broadcast came to you from the Indraprasth channel of Akashvani, Delhi.